Welcome, friends. This is Avinash Gorakshekar, and I welcome you to another interesting episode of Corporate Face-to-Face series. In fact, friends, in this face-to-face corporate series, which is very popular with our viewers, we introduce to you emerging corporates, which are growing rapidly in the market, talk about their business, their future growth plans. And today, we have a very interesting company with us by the name of Rushil Decor Ltd. And we have the privilege of having the executive director, Mr. Rushil Thakkar. Rushil bhai, thank you very much for sparing your valuable time today. I do hope that this interview will be able to understand your company better so that it can benefit our viewers really in a good way. Thank you, Avinash ji, for the opportunity. Yeah. Rushil bhai, my first question is, although it is a very basic question, if you could tell us, how did the management actually start this business? How was the business journey in the initial years? Now, of course, everyone is aware that Rushil is a very well-known brand in the MDF market. So if you could share a little bit about your initial business journey, and then we can move on to the next questions. So, Rushil Decor was started by my grandfather and my father, Mr. Krupesh Thakkar and Mr. Ghanshyam Thakkar. We started with the business of HPL first. So, in 1993, we just took over one unit in GIDC, Gandhinagar, and the business was started from there. Before that, my grandfather had a rich experience of trading the panel products and the wood products. So we knew the market at that point of time, and how it is going to turn, that also we knew. So as and when we took a growth for expanding one plant to another to third for HPL, and then we thought of diversifying into the other panel products such as MDF and PVC board. So that was a small journey where we started, but the main point was the 2010 when we decided to make sure that we put our MDF line in Chikmagalur, south of the India, in Karnataka, where at that point of time, no other manufacturer was present in south of India. So that was the key turning point where the growth journey, the extensive growth journey of Rushil Decor started. Okay. I think nicely articulated, Rushil bhai. Now tell me one thing, within our entire basket of MDF products, if you could tell us, what are the kind of various products we make, and within that, what is the value addition segment? What kind of percentage does the value addition currently occupy? If you could give us some, inputs on that. So if it, as of now, we see the numbers, our MDF business takes the 65% of the turnover, and rest of the turnover is taken care by the laminate segment. If we talk about MDF, then the total capacity is around, I think, 330,000 CBM, out of which 27% of the market is taken care by the value-added products. That is Wheel Max Pro, that is called HDF, Wheel Pro Plus, that is exterior grade product. Then we have prelam, and then the highest level of prelam grade, that is called HDF prelam. So we give a wide range of product basket to our customer to make sure that the ease to customer is there to sell the product in the market as soon as possible. Okay. Rushil bhai, in a very simple way, if I were to ask you, हमारे product base में कितने SKUs होंगे, यानी हर product का अलग-अलग SKU होगा, तो SKUs कितना मोटा-मोटी अपने product range में होंगे? Sir, laminate की बात करें तो laminate is all about the designs and texture. So I have more than, as a company, we have more than 500 plus designs, 50 plus textures. So combination of SKUs are too high. Our MDF की बात करें तो we have various international sizes available from thickness of 2 mm to 30 mm in each of the grade available है. So the SKUs are there is a huge product basket available with us. Another thing I was reading, Rushil bhai, is that इसमें आप jumbo size भी MDF boards बनाते हो, तो उसके बारे में कुछ बताइए. See, basically, the jumbo size MDF boards are for the export market. As our new plant in Andhra Pradesh is located nearer to the port, we have got those opportunities to make sure that we export the value-added products by making jumbo size boards to the countries like Iran, Iraq, then a few of the European continents, etc. Okay. So fine, these are basically for export markets, not for the domestic markets. Yes. Now, Rushil bhai, another thing which I want to understand, अपना ये product जो है MDF, इसमें the competitive intensity is very strong.
So in this kind of scenario, what is the differentiation strategy Rushil has, taken? Like, why is our product, more popular with the market, with the customers? हम लोग ने ऐसा क्या special किया है? If you could, put it in a very simple way to us. Sir, first of all, let's start with the raw material. अभी हम इंपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्ट में ज्यादातर रॉ मटेरियल जो बनता है 40% वुड होता है एमडीएफ में, और 40% वुड का में अगर रबर वुड हो तो उसके अंदर लेटेक्स कंटेंट होता है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंपोर्ट्स। और वी मेक आउट ऑफ द यूकेलिप्टस, 100% यूकेलिप्टस में से हम एमडीएफ वुड बनाते हैं, जिसकी वजह से उसकी फाइबर स्ट्रेंथ, उसकी फाइबर क्वालिटी, उसका बॉन्डिंग एक काफी स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू रबर वुड एंड अदर स्पीशीज. So that is one of the USPs. Another thing is we are close to the raw material where the wood is available. So हमारा जो purchasing raw material का होता है वो काफी हद तक एक limited एरिया से होता है, जिसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट एडवांटेज है वो भी थोड़ा हम लोग कस्टमर को ज्यादा अच्छे से पास ऑन कर सकते हैं. सो वी कैन से वी आर क्लोज टू रॉ मटेरियल एज वेल एज वी आर क्लोज टू अवर कस्टमर्स. Okay. So I think both points covered very well, that raw material sourcing as well as closer to the customer. That actually is a big, USP and a differentiation for you. Yes. Like another thing, what I want to understand is that now we are hearing that government is spending a lot of infrastructure. अभी hotel sector, real estate sector, यहाँ पे बहुत growth आ रहा है. In fact, after COVID, everything has become normal. Now, in such a scenario, what is the kind of opportunity size for a company like Rushil? Like, obviously, this is a product which is gaining popularity, quite significantly. So, in your sense, what are the signals you are getting from the ground? When you talk to your salespeople, when you talk to your, dealers. So, overall, how big is the opportunity, और आपको growth demand में कैसा दिख रहा है अगले 2-3 साल में? अगर हम एमडीएफ की बात करें तो इट हैज गॉट अ सिग्निफिकेंट सीएजीआर. हम अगर देखने जाए तो इंडस्ट्री जो 2025 में 5,000 प्लस करोड़ पहुंचने वाली थी वो आज पहुंच चुकी है. सो दैट वे द ग्रोथ इन द एमडीएफ सेगमेंट इज रियली हाई. एंड द बिगेस्ट थिंग इज द एप्लीकेशंस. जो एप्लीकेशन आज तक कभी डिस्कवर की नहीं गई थी या किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था, वो सारी एप्लीकेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए कस्टमर का टर्नओवर रेशियो उसमें ज्यादा हो रहा है. तो इट इज नॉट ओनली जस्ट रिप्लेसिंग प्लाईवुड और रिप्लेसिंग वुड, इट्स अबाउट के कितनी जगह पे यूज हो सकता है. जैसे आज हम लोग बात करें तो वेडिंग कार्ड्स भी आजकल पेपर की जगह ज्यादातर लोग एमडीएफ के बॉक्सेस पे दे रहे हैं. इफ यू टॉक अबाउट टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल में जो हम लोग कापड़ जिसके ऊपर रैप करते हैं वो पहले कार्डबोर्ड हुआ करता था. नाउ पीपल आर हैव स्टार्टेड यूजिंग 5 mm एमडीएफ फॉर रोटेटिंग दोस, क्योंकि उसकी रीयूजेबिलिटी है. तो उसकी वजह से पीपल आर मोर एक्साइटेड एंड मोर कीन टू नो दैट हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट आ जाए जो जिससे हम वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं, और उसको अगर हम लोग रीयूजेबल भी कर सके तो वो कस्टमर के लिए भी बेनिफिट है और हमारे लिए भी बेनिफिट है. So that way the MDF has got a brilliant amount of the applications. So, Rushil bhai, what I want to understand is that do you have any product development team or R&D team जो constantly नए applications के ऊपर आप काम करते हो? Because this is very interesting to hear that now these applications have also come, which I think earlier nobody would have even heard and believed them. So, is this a normal process at your end, so that you all try to experiment in the market and try to innovate constantly so that your product vibrancy continues to be quite strong with the customers? Yeah, we have a strong R&D team in our factory, and we make sure that the customer need is satisfied first. Okay. Okay. कोई भी कस्टमर होता है उसका नीड वैसा होता है कि मेरे को प्रोडक्ट, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हम जो आज पेस्ट्रीज खाते हैं, पेस्ट्रीज के नीचे जो जो कार्डबोर्ड था पहले, नाउ दैट हैज बीन रिप्लेस विद 2 mm एमडीएफ, क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रेंथ ज्यादा है. So in order to serve that we need to make sure that अगर वो केक 500 ग्राम का या 1 किलो का है तो उसके ऊपर वो स्ट्रेंथ उतने बोर्ड पे रहनी चाहिए. So there has to be a constant innovation and revolution to be done to make sure that we cater n number of applications. Okay. I think very nicely told by you. Now tell me one thing, what is the potential of the export market? I think you mentioned that the jumbo boards which you said earlier, they are largely for the export market. So how is the export market positioned for players like Rushil? Like export market भी हमारे लिए इंडिया के लिए potential है, या I mean is it only initially the domestic opportunity which is humongous? So please tell us something on the export market side. So talking about exports, yes, export में opportunity अच्छी है.
there are too many markets which are opening up, as well as there are too many markets slowing up as well. But in order to balance everything, we always make a strategy जो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक का कॉम्बिनेशन पे चलता है. जैसे अभी दिवाली आ जाएगी, उस वक्त हमारा डोमेस्टिक काफी स्लो हो जाता है, उस वक्त हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ जाता है. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब क्रिसमस आता है, तो क्रिसमस के वक्त हमारे एक्सपोर्ट्स डाउन हो जाते हैं और डोमेस्टिक बढ़ जाता है. सो वी हैव अ वेरी डीप स्ट्रेटजी ऑफ एक्सपोर्ट्स टू मेक श्योर दैट द global reach is also there, and in a domestic is also catered very well. And we also make sure that make in India is there everywhere we sell. ओके, फाइन फाइन. ऋषिल भाई, दूसरी बात पूछना था कि हमारा जो बिजनेस है वो ज्यादातर B2B बिजनेस है या इसमें कोई B2C कंपोनेंट भी है? एंड लुकिंग एट द B2B काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, typically from the time you get the order from the customer and you deliver it, what is the kind of timeline कि अपना स्पीड टू मार्केट कितना होगा? लाइक मेरे को अगर आज ऑर्डर मिला तो वो कंप्लीट करके कस्टमर तक, डीलर तक पहुंचने तक मोटा मोटी कितना टाइम लगता है? सर जनरली हमारा जो प्रोडक्शन टू सेल्स का जो रेशियो है, दैट इज हार्डली 30 days. तो हम 30 दिन में तो हम लोग हमारे कस्टमर तक हमारा माल पहुंचा ही देते हैं. अगर B2B बिजनेस में हम लोग इतने एग्रेसिव है, अगर सर्विस नहीं दे पाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास एक अनड्यू एडवांटेज की तरीके से चला जाएगा, जो हम देना नहीं चाहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. Yeah, I think understood. Overall, रुशील भाई, tell me one thing that अपना हमारा एक्टिव कस्टमर बेस कितना होगा? अभी हमारा रेवेन्यू कुछ 800 करोड़ है FY23 के लिए. We had a hit of almost 150 crores. So, what is the active customer base? And secondly, from year on, in terms of your, kind of growth plans for the next say 2 to 3 years, you all have got adequate capacity. You all have now got a very strong brand. What is the kind of growth in terms of at least top line growth, if you could give us an idea कि अगले 2-3 साल में आप broadly what kind of top line growth can we expect from the company? Sir, I can say approximately our growth would be in between to 16 to 18% on the top line. Okay. On year basis. And talking about the customer base, we have more than 1000 distributors across India. We are present in more than 51 countries as of now for exports. And upcoming capacity जो हम लोग laminates के अंदर ला रहे हैं, उसके बाद we'll be able to cater complete European market, American market, South American market, Australia, New Zealand and mature market as well. To make sure, अभी हमारे पास वो laminate में sizes available नहीं थी. अभी now we have already done our capex and we have started the project. Okay. So very soon in I think next year first quarter end में हम लोग उसको operational भी कर देंगे. तो उसके बाद we can say that additional revenue of roughly 50 to 60 crores can be added in the export turnover of laminates in next financial year. And talking about the export market which you mentioned rightly, what is the kind of capex you have incurred? Like अभी आपने बोला कि हमने थोड़ा सा extra capex किया जिससे अगले साल first quarter तक our export revenue will increase. So broadly, what has been the kind of capex you have spent at least till now for all this? So total project cost would be around the 60 crores. Okay. And out of 60 crores, we have just finalized the land right now. Okay. So उसके ऊपर 8 महीने का करीबन प्रोजेक्ट पूरा चलेगा. 8 से 9 महीने के अंदर विल बी ऑपरेशनल. और इसके लिए जो फंडिंग है, इसका फंडिंग कैसे प्लान किया? आई हर्ड देयर वाज सम प्रपोजल फॉर सम राइट्स इशू आल्सो. तो राइट इश्यू तो ऑलरेडी हमने कर लिया है, बट दैट वाज नॉट फॉर दिस पर्पस. Our right issue was for the purpose of deducting the debt. हमारा बहुत क्लियर फंडामेंटल है कि अभी हमें हमारा डेट रेशियो 1:1 के ऊपर नहीं जाना है. बिल्कुल. ओके. तो ये जो कैपेक्स हो गया था, इसमें ज्यादातर क्या कैश फ्लोज और थोड़ा इंक्रीमेंटल डेट लिया है आपने? ये जो भी अभी आप बोल रहे हो 8-9 महीने में प्रोजेक्ट नहीं, शुरू हो? वो इंटरनल अप्रूवल से ही सारा प्रोजेक्ट हो जाएगा. ओके. And after the expansion is over, like in terms of capacity, कुछ आइडिया दे सकते हैं कि अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी होगी लैमिनेट्स की, MDF की? So our additional capacity would be added by 1.2 million sheets. Okay. जो अभी I think
I can share you the exact numbers. No problem. I think this is So okay. current capacity is 3.49 and it will be added by 1.2 million Okay, okay, sheets a year. okay. Now, ओके अंडरस्टूड। ऋषि भाई दूसरा एक बात बोलिए कि देखिए ये इंडस्ट्री में कंपटीशन तो काफी है, लेकिन वी हैव बिल्ट अ ब्रांड व्हिच इज बेस्ड ऑन आवर प्रोडक्ट क्वालिटी। नाउ टेल मी वन थिंग, हु आर आवर कंपेरेबल पीयर्स? लाइक बेसिकली एमडीएफ में बहुत लोग हैं, बट अगर लेट अस assume Rushil has to be compared with somebody. I mean, you know your product better. We have seen many products. So which could be the comparable peers where we could compare a company like Rushil? I mean, इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन देयर आर अदर प्लेयर्स आल्सो इन द मार्केट। सो इफ यू कुड शेयर सम कंपेरेबल पेयर्स प्लीज। सर एमडीएफ में ऑर्गेनाइज प्लेयर गिन के आई थिंक 4 या 5 है, out of which we are the third largest capacity as of now. एंड इन टर्म्स ऑफ सप्लाई, रुशील भाई कैसा लग रहा है अगले 2-3 साल में? इज एनी प्लेयर पुटिंग अ लार्ज कैपेसिटी? बिकॉज एमडीएफ में बीच में मैंने सुना था, आई मीन आई माइट बी रॉन्ग, बट there was a lot of supply side problems, but now I think equilibrium has got built in, demand is also growing. So any other big player, any new player is entering the market? Have you heard this from your sources? अभी कोई नया प्लेयर तो नहीं आ रहा है, बट जो पुराने प्लेयर्स है they all have started talking about the expansion of the new line, so the capacity as of now is coming from the players who have been already into the business. Okay, okay. And Rushil bhai, one more thing I wanted to understand is that finally, how do we do product differentiation? You said the raw material part and being closer to the customer, but if tomorrow, somebody goes to a dealer, where Rushil is selling the product, is pricing a very important factor? Like pricing pe apna kya strategy hai? Are we very reasonably priced, or do we sell our products at a premium looking at the brand? So on this point, if you could, tell us. Sir, that depends again. जो नॉर्मल प्रोडक्ट है वो हम हमारे पीयर से 2% में ही we are priced lower by 2%, but at the same time when value addition comes, where our expertise comes, there our revenues are more than our peer competitors. So that is a combination of everything which plays a big role in the achievement of the top line. Okay. No, but basically, I want to understand ki, is there clearly a demarcation in the market that Rushil is known for its brand, its product quality, and that is why people are willing to, give a slight premium in the market depending on the product which you said. So, have you come across customers who are willing to pay a good price for premium quality? That is what I want to. Yeah, of course. We have a customers like Live Space, then we have customer like Kirby, who is doing the warehousing solution for Amazon, Flipkart, etc., who have been paying us the premium because of the quality of the product we give. Okay, fine. So basically, quality plays an important role. And just one related question to that, Rushil bhai, कि ये धंधे में pricing power मिलता है क्या? I mean, is it a volume driven product, or is it a margin accretive product, or is it a balance of both? No, this is purely a volume based business. Okay. MDF is a commodity. Okay. तो अगर रोटी कपड़ा मकान 3 चीज हमारा नेसेसिटी है, तो जब मकान आता है तो मकान को सजाने के लिए सबसे पहली चीज लगती है, या तो लकड़ा लगता है, प्लाईवुड लगता है, एमडीएफ लगता है। तो अभी एमडीएफ की जो खासियत है वो ये है कि वो स्ट्रेंथ भी प्लाईवुड की देता है, एक टेक्नोलॉजी से फाइबर लॉक किया गया एक पूरा सिमेट्रिकल बोर्ड है, होमोजीनियस स्ट्रक्चर है, so it is easy to paint, you can do any application you want, and pricing में भी वो कम से कम 25% तो सस्ता है। अच्छा, so अभी ये एंड यूजर के पास ये अवेयरनेस आ रही है, उसकी वजह से ही मेन मार्केट ग्रो कर रहा है। बिल्कुल। Tell me one thing that now you told me about the qualities of MDF in terms of the main raw material. जैसे आपने बोला कि raw material और customer से आपको close रहना है, तो ये धंधे में अगर किसी को सक्सेसफुल होना है रुशील भाई, तो व्हाट आर द की वेरिएबल्स टू सक्सीड? बिकॉज यू सेड इट इज अ कमोडिटी। तो अगर आपने को सक्सेसफुल होना है, तो कौन से ऐसे वेरिएबल्स होना है जहां पे आपका परफेक्ट काम होना चाहिए, जहां पे आप मार्जिन भी प्रोटेक्ट करते हो, वॉल्यूम ग्रोथ भी आता है, एंड ऑब्वियसली द बेनिफिट ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ ट्रिकल्स डाउन टू द बॉटम लाइन? तो सबसे पहले रॉ मटेरियल का तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि यू नीड टू बी नियर टू द रॉ मटेरियल इन टू मेक श्योर दैट अवर रॉ मटेरियल इज नॉट बिकमिंग सो एक्सपेंसिव। और उसके अलावा मेन चैलेंज है द टेक्नोलॉजी, because this is a capital intensive production lines, so this requires a huge number of capital cost to be invested.
Okay. सो वो भी एक कंसर्न आ जाता है बाकी लोगों के लिए या किसी के लिए भी सोचने पे मजबूर होना कि डू आई रियली नीड टू स्टेप इनटू दिस इंडस्ट्री इफ आई एम नॉट नोन टू द इंडस्ट्री। और तीसरा है इसका लॉजिस्टिक्स। हाँ. लॉजिस्टिक्स अगर आपका अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा है, इफ योर लॉजिस्टिक कॉस्ट इज गोइंग रियली हाई, देन देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग। Okay. Fine. So basically, these are the three important things which you need to control to यस, ensure that you get the best optimum level of profitability. ठीक. यस। Now tell me, sir, इसमें working capital का cycle normally कितना बड़ा होता है? Like, especially for inventory as well as for your debtors. मोटा मोटी customer कितने दिन में पैसा देता है? And do you have to stock a little more of your raw material to ensure that, supplies are assured, for you? सर रॉ मटेरियल की बात वैसी है कि अगर रॉ मटेरियल देखने जाए तो हमें बारिश का जो सीजन रहता है, वो बारिश के सीजन में हमें स्टॉकिंग उसके लिए पहले से करनी पड़ती है, क्योंकि उस वक्त जो फार्म्स में से ट्रक्स आने चाहिए उतना एफिशिएंटली नहीं आ पाते, बिकॉज दे गेट स्टक इनटू द मड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वी मेक श्योर फ्रॉम आवर Q1 वी स्टार्ट पाइलिंग अप द स्टॉक फॉर द वुड, और दैट इज द बेस्ट सीजन जिसके हम लोग पाइल भी कर सकते हैं। Okay. तो रॉ मटेरियल में यस वी नीड टू स्टॉक रियली हाई इन, बिकॉज टू मेक श्योर बाकी के 3 महीने जब रेन पड़ रहा हो तो वी हैव द एम्पल नंबर ऑफ फूड टू मेक श्योर आवर प्रोडक्शंस आर रनिंग। Okay. टॉकिंग अबाउट द कस्टमर साइकिल, द समवेयर अराउंड 21 days का अभी साइकिल है, Okay. Okay. नॉट मोर देन दैट, बट मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर्स आर अंडर द 7 days ऑफ साइकिल। Oh, very good. I think ये बहुत अच्छा है उशिल भाई. This is really very good to hear. Now tell me one thing, इस business में थोड़ा seasonality होता है कि October to December या maybe April to June, normally this is your peak season, or is it a very stable period all across the 4 quarters? Sir, the business is divided into many parts. First of all, when we look about the domestic market, yes, we have the seasons, certain seasons. मैंने पहले भी ये आगे भी बता चुका हूँ कि जब दिवाली आती है उस वक्त हमारे लिए मार्केट डोमेस्टिक का स्लो हो जाता है। Okay. वैसे ही जब हमारे लिए जब धुलेटी आती है, होली आती है, उस वक्त भी हमारे लिए मार्केट स्लो हो जाता है, क्योंकि सारी लेबर्स, काफी तर लेबर जिसमें जो काम करती है वो अदर राजस्थान से है या यूपी से, और वहाँ पे ये दोनों फेस्टिवल्स का बहुत ही महत्व है। बिल्कुल. तो उसकी वजह से ये 2 सीजन होते हैं वैसे कि जिसमें हमें थोड़ा स्लैग मिलता है, बट उसके सामने हम उतना भी उसको कवर अप कर लेते हैं एक्सपोर्ट्स में। Okay. Understood. I think very well articulated. Now tell me one thing in terms of financial performance. FY23 was a very strong year. 800 crore का आपका revenue था, 150 crore का almost EBITDA था. I think 78-80 crores का profit था. EBITDA margins were also very solid, around 18%. Now, how confident are you, Rushil bhai, that this at least margin structure will be sustainable? 17-18% margin is very good. Even the revenue growth was very good. So, अगला 1.5-2 साल में can we assume that मोटा मोटी हम लोग एटलीस्ट जैसे आपने कहा कि 15-16% का ग्रोथ है, बट मार्जिन आर वी कंफर्टेबल दैट 18% का मार्जिन कैन एटलीस्ट बी मेंटेन, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बढ़ रहा है. तो ऑन दैट इफ यू कुड शेयर सम इनपुट्स फॉर अस. एज ऑफ नाउ जो हमारा प्रिडिक्शन है, वो प्रिडिक्शन अगर देखने जाए तो वी विल बी मच मोर इन अ कंफर्टेबल वे टू सस्टेन अवर मार्जिन्स, ओके. बिकॉज अभी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम लोग नहीं कर पा रहे थे, नाउ वी हैव स्टार्टेड ऑप्टिमाइजिंग द कैपेसिटीज एज वेल. ओके. So for us, yes, I would like to say that yes, we will be sustaining our margins. और थोड़ा बहुत ऋषिल भाई आपको ऑपरेटिंग लिवरेज का भी बेनिफिट मिलेगा ना, जो कैपेसिटी आपने डाली है उसको जैसे जैसे आप यूटिलाइज करोगे, तो योर रेवेन्यू ग्रोथ विल बी, आई मीन योर प्रॉफिट ग्रोथ विल बी मच स्ट्रॉन्गर, बिकॉज ऑब्वियसली यू ऑल विल बी एबल टू रैंप अप योर कैपेसिटी ग्रेजुअली गोइंग फॉरवर्ड. और उसमें भी अभी ये टेकन अ टारगेट ऑफ रीचिंग टू 40% ऑफ द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ओके. अभी जो करंटली 27% पे है. ओके. तो बेसिकली मार्जिन स्ट्रक्चर विल ऑब्वियसली गेट बेटर एंड बेटर. यस निखिल भाई, माय लास्ट क्वेश्चन नाउ टू यू इज दैट हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? आई मीन ऑफ कोर्स कोविड तो हो चुका है, बट हर बिजनेस में देयर इज समथिंग लाइक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है. ऑब्वियसली वी हैव टू, एवरी कंपनी गोस थ्रू दिस क्राइसिस एंड बाउंसेस बैक, बट इन आवर बिजनेस व्हाट आर द सिग्नल्स व्हिच आर लिटिल कॉशियस व्हेन वन हैज टू बी लिटिल कॉशियस? अभी तो सब कुछ ठीक है, आई थिंक टच वुड एवरीथिंग शुड डू वेल, बट फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, यू ऑल हैव बीन इन द बिजनेस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, तो मेन रिस्क धंधे में क्या है? सर, मैं ये क्वेश्चन को 2 तरीके से मैं स्प्लिट करना चाहूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा रिस्क है वुड. हाँ. अगर हम लोग एक्टिवली एग्रो फॉरेस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे
तो यस दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट, क्योंकि जिस स्पेस पे हम लोग वो वुड को यूज कर रहे हैं, अगर उस डबल पेस में हम उसको उगाने का काम नहीं करेंगे हाँ तो वो एक सबसे बड़ा रिस्क है हमारे लिए. बिल्कुल. बट आई एम रियली प्राउड टू से दैट वी आर वर्किंग ऑन द that front as well, and we are managing around we managed to plant around 12 crore number of trees last year in Oh, Karnataka and Andhra Pradesh. oh, very good. So we try to eliminate the risk as well. So basically, apart from the wood, there is no major kind of risk in the business, according to you, right? और दूसरा है लॉजिस्टिक्स. अच्छा, लॉजिस्टिक में अगर अगर लॉजिस्टिक्स में अगर डीजल का प्राइस बढ़ता है या फिर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है, तो उस वक्त हमारे लिए लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि कस्टमर जब हम लोग ऑर्डर्स लेके बैठे हो, वी हैव बीन टाइड अप फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट्स, तो हमें वो ऑर्डर करना पड़ता है. दैट इज द टू मेजर रिस्क which we are evaluating in terms of the risk. Okay. So I think basically your point is right. The logistics, cost is very important. You need to keep them under control, and of course, second is the wood part, which I think to a large extent, you all are making efforts to ensure that the natural resource is also preserved. So anyway, Rushil bhai, I think thank you very much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने को, और my best wishes to you, your entire team. We hope that company will do much better in future, and we'll definitely like to be in touch with you in future also. So once again, thank you. Thank you, Avinash ji.